Hi friends, this is Abhishek and today I am going to discuss with you all five basic mistakes that we do in preparation of mathematics for board exams. So stay with me and let's begin the. So before moving to the video, I would like to show my numbers to you all. That 93 marks that you are seeing, I got in class 12th and 95 marks in class 10th. So what are the points that I did in both the classes so that I got these much of numbers, and what mistakes what that I did, and you do not repeat that mistake so that you can achieve much more marks than these. So please keep these points in your mind while preparing for the exam. So let's begin to our video. So the very first mistake that do, we never try to read the introduction of the chapter in mathematics. What happens when we do not read the introduction of the chapters? We do not know the basics of that chapter. Means if we read the introduction of the chapter, we will come to know what is the chapter trying to say us, and what are the basics of the chapters, and what formulas are going to be introduced in this chapter. So these all things will be clear in your mind. Hard to hard 15 to 20 minutes you will need to read all the introduction of the chapters. I am not saying that learn the things that is written in the introduction, but just for the basic information, please read that introduction. That will be very helpful for you, and also many times objective questions also asked from that sections. So keep these things in your mind while starting for the preparations. Second mistake what we do, we just study and try to cram the things. Don't do this, because cramming is not the thing that we need in this preparation for the mathematics. रटने से चीज़ों का मतलब नहीं हो पाता कि अपन सोचेंगे रट के चीज मैथ्स में समझ लें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो डोंट ट्राई टू क्रैम द थिंग्स, जस्ट practice and practice. In mathematics the main thing is to practice, that how much you can practice and practice more and more. That is the only solution for getting good catch on the concepts. So clear the concepts, practice regularly, don't try to cram the things, and don't try to just go for the formulas. Mainly if you are practicing questions regularly, you will know and learn the formulas by heart instead of you are learning the formulas. So just practice the questions, you will get to know about the formulas. So don't worry about that. Third major mistakes what we do, we use calculators while studying, and also listen musics. This is not that much good what people thinks. लोग कहते हैं कि गाना सुनते सुनते मैथ्स अच्छी हो जाती है. दैट इज़ नॉट द पॉइंट. क्या रहता है कि व्हेन वी लिसन द म्यूजिक, हमारा जो माइंड रहता है दैट डिवाइड्स इनटू टू things. One is the music and second is the studies. So when we divides our concentration in two things, are basically concepts, the time that we want to give to the study is not that much perfect that we need. So क्या होगा कि जैसे ही आप गाना सुनते रहेंगे तो आपका कुछ ना कुछ माइंड का एक पोर्शन वो गाने पे ध्यान देने लगेगा. तो जैसे ही वो गाने पे ध्यान देगा ना, तो फुल कंसंट्रेशन से स्टडी नहीं हो पाएगी. इससे बढ़िया ये है कि अगर आपको गाने सुनने की शौक है तो आप पहले गाने सुन लीजिए, उसके बाद पढ़ाई करिए. So divide your time for the music and the studies, and I would like to recommend that this is only factual things, and this is only in the minds कि हम सोचते हैं बस कि गाना सुनना जरूरी है या फिर ये करना जरूरी है, इसके बिना मन नहीं लगता. all these things are imaginary. अगर हम चाहें तो बिना गाना सुने भी अपन मैथ्स कर सकते हैं, और बिना मतलब कुछ भी चीज़ करें हम एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकते हैं. तो ऐसे एग्जांपल्स भी बहुत रहते हैं. सो डोंट ट्राई टू मिक्स द थिंग्स, डोंट ट्राई टू यूज कैलकुलेटर्स. क्या रहता है कैलकुलेटर्स यूज करके, आई एम नॉट सेइंग दैट नेवर यूज द कैलकुलेटर्स, क्योंकि बहुत सी कैलकुलेशंस ऐसी रहती हैं जिनमें टाइम बच जाता है, हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं. बट मेनली ट्राई टू यूज बाय योर माइंड, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने माइंड से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारी मतलब थिंकिंग पावर बढ़ेगी, और हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, हमारी कैलकुलेशन स्किल्स अच्छी होंगी. बिकॉज एट द एंड इन द पेपर यू आर नॉट गोइंग टू बी अलाउड बाय द कैलकुलेटर्स. So if you are not getting calculators at the end point, then why we should start the journey that is not completed with the point that we are going to not get in the exams. And fourth mistakes what we do is we never examine school test. तो होता क्या है कि ऐसे तो हमारे पास बहुत से टेस्ट रहते हैं. हम क्या कर सकते हैं
कि मोबाइल उठाओ, आप कोई सा भी टेस्ट देखना चाहें तो थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट हैं, लेकिन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्कूल टेस्ट? We have to evaluate the things from the school test, and we have to examine ourselves from the school test. How we can do that? कि आपके प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, गिव योर प्री बोर्ड्स. अब क्या रहता है प्री बोर्ड्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि बोर्ड्स में आपको अगर मार्क्स इंक्रीज करने का कोई चांस मिल रहा है तो आप उसको छोड़ दें, लेकिन मैं प्री बोर्ड में ज़रूर कहूँगा कि आप बिल्कुल ऑनेस्टली पेपर दें. जितना आपके पास मतलब टैलेंट है, जितना आपने पढ़ा है, अगर आपने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा तो भी अपने मन से दें, चीटिंग ना करें. और अगर आपने बहुत पढ़ा है तो भी आप अपने मन से दें, बिकॉज एट द एंड यू आर गोइंग टू एवेल्यूट इमेजिन योर सेल्फ आफ्टर गिविंग दीज प्रीबोर्ड्स. प्रीबोर्ड्स के हिसाब से आपको अपने आप को एवेल्यूट करें, क्योंकि एक टाइम अपन को पेपर में देने का यही मतलब रहता है कि हम अपने आप को समझ पाएं कि हम कितना पानी में. सो दैट इज द थिंग. एंड ऑलवेज एग्जामाइन द स्कूल टेस्ट. जितने भी आप स्कूल टेस्ट देते हैं उसको एग्जामाइन करिए, तभी उनका बेनिफिट है. अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ गिविंग दीज स्कूल टेस्ट. So give school tests and examine them, and if you are not getting some points clear, get them clear by your teachers and other methods you are using for the studies. The fifth and the last point that I would like to discuss with you all, that don't try to solve same types of questions and some selected chapters. क्या रहता है, हमें इंटरेस्ट रहता है, जैसे अगर किसी को कैलकुलस में इंटरेस्ट है तो वो बस कैलकुलस यूज़ करता है, कहता है कि 50% कैलकुलस से आने वाला है, या किसी को प्रोबेबिलिटी पसंद है तो ही इज डूइंग प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी. सो डोंट डू लाइक दैट. मेकिंग कंसेप्ट क्लियर इन ओनली वन टॉपिक इज नॉट दैट मच बेनिफिट. अगर आप हर एक कॉन्सेप्ट पे थोड़ी थोड़ी पकड़ बनाएं वो ज़्यादा बेहतर है किसी एक कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा पकड़ बनाने की. तो सभी चैप्टर्स को साथ में लेके चलें, टेक ऑल द चैप्टर्स साइड बाय साइड एंड गिव प्रॉपर टाइम टू ईच चैप्टर्स. और 1 मार्क्स से लेके 6 मार्क्स तक के सभी क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट यू आर गोइंग टू फ्रॉम विच यू आर गोइंग टू हैव बेनिफिट एट द एंड. These are the 5 basic things I would like to discuss with you. So all the best for your preparations and thank you for watching this video. And if you have not watched my English preparation video, that is I have already uploaded, so you can also watch it. So thank you guys, and so you can also subscribe your channel to stay connected. I will be going to bring a new video on science or chemistry, that I will decide. Okay, thank you guys.